discussion. And in this video lecture, we are going to be discuss about the past paper of the 8th semester, the University of Sargodha. And this paper is about the plant physiology II, botany. And its code is 421. And the whole marks is 60. And the firstly, we discuss about the objective part. The first one portion is about the question one and is about the short questions or जो first questions हैं that is related about the differentiate between the auxins and the cytokinins. Auxins और cytokinins के between जो है वो difference है and that is comprised about the 2 marks or that is belong to the plant hormones parts. The second question is what are the basic functions of the brassinosteroids in the plants. Plants के बीच में जो वो brassinosteroids होते हैं वो plant hormones उनका क्या functions and that is. And the number 3 is differentiate between the symplast and the apoplast pathway. And the number 4 is what do we mean by the potential while describing the water potential. ठीक है, इसमें हम लोगों ने बताना है कि पोटेंशियल का क्या मतलब है जब हम वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. एंड द नंबर 5th इज व्हाट इज द रोल ऑफ द वाटर पोटेंशियल द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्लांट. तो कैसे जो है वो क्या वाटर पोटेंशियल का क्या रोल होता है कि वाटर जो है वो सोइल से एटमॉस्फेयर के थ्रू जो है चला जाता है. तो इसमें सारे का सारा जो बेसिकली कंसेप्ट है कैसे रूट्स के जरिए से वाटर अब्सॉर्ब होता है और थ्रू द प्लांट बॉडी जो हो जाता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी वन एंड दैट इज रिगार्डिंग द प्लांट ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन क्या क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो सल्यूट और सॉल्वेशन जो सोल्यूशन है उसकी जो रेगुलेशन होती है उसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं. एंड द नंबर 7 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द टर्गर प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक और टर्गर प्रेशर की क्या डिफरेंस होता है. और नंबर 7 that is questions that are repeated and that is symplast pathways and apoplastic pathway. So define the hydraulic conductivity. Hydraulic conductivity की definition is very important for regarding the exam point of view. What do you mean by the gene expression? Gene expression is also very important one. And the next is how does the pressure chamber work? Pressure chamber जो है वो कैसे work करता है. And the number 12 is what is the effect of the soil pH on the nutrient availability. न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के जो है वो इफेक्ट सोइल पीएच के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है. एंड दैट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड देन वी विल मूव टू द सब्जेक्टिव पार्ट. ओके, द नेक्स्ट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन द सोइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड द सोइल प्लांट का एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम के बारे में जो है वो डिस्कशन करनी है. एंड द सेकंड इज द सीड फोटोपेरिडिज्म. सबसे पहले जो वो सीड फोटोपेरिडिज्म को डिफाइन करता है उसके बाद जो वो डिस्क्राइब द रोल्स इन द फ्लावरिंग एंड आल्सो इन द बायोकेमिकल सिग्नलिंग. द नंबर 4 क्वेश्चन इज द डिफाइन द सर्केडियन रिदम. सर्केडियन रिदम जो है वो फ्लावरिंग से रिलेटेड है और इसको जो है वो क्लासिफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द फोटो पीरियोडिक रिएक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन द फोटो पीरियोडिक इंडक्शन. तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द प्लांट फिजियोलॉजी पेपर. डिफाइन द फाइटो हार्मोन्स. दैट इज अगेन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसके क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. फाइटोक्रोमोन्स. फाइटो जो है वो क्रोम्स की फाइटोक्रोम्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं पिगमेंट्स होते हैं और इनका क्या रोल होता है इन द बायोलॉजिकल रोल. And the number 6 is comprehensive note on the availability, absorption, and the transport of the physiology of minerals. ये minerals के regarding है. So that is actually about the very very important questions, the short questions and the long question, objective and the subjective parts. And that is that was undertaken by the University of Sargodha in the 2022. I hope so. It will be the helpful for you, inshallah. Next time we will come with another important past paper. Allah Hafiz.